हेलो फ्रेंड स्वागत जनाऊँ वर्तमान क्लास को आशा करुच्ची तुम मैंने समस्ते बहुत भलरे थिबो एवं निज निजर एग्जाम पाई बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन भी करुथिबो। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू समस्त को प्रति नमस्कार। तो जल्दी जल्दी आसिकी क्लास रे जॉइन हो जाओ। वर्तमान आम मैंने लाइव आसी सारीचे। जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन भी विजिबल अच्छी देन मते फर्स्ट के कमेंट सेक्शन रे जणाई दियो देन आम मैंने क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो आज आमर पेडागोजी क्लास रही मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जो क्वेश्चन गुड़ाक पूर्वर आमर डिफरेंट एग्जाम रे आसी सारी से सब को वर्तमान आम मैंने डिस्कशन करवा। तो जल्दी जल्दी आसिके क्लास रे जॉइन कर जाओ एवं जदि मोर वॉइस क्लियर अच्छी एंड स्क्रीन भी विजिबल अच्छी फर्स्ट मते कमेंट सेक्शन रे जणाई दियो जे ऑल क्लियर देन आम मैंने आग को बढ़िबा एवं आज क्लास टी को स्टार्ट करवा। ओके ऑल क्लियर ठीक अच्छे। तो समस्त को रिक्वेस्ट जे समस्ते ये जो क्वेश्चन गुड़िकर आंसर आसू कि न आसू चैट सेक्शन रे बा कमेंट सेक्शन रे टिके एक्टिव रहइबो। ओके देन चलो क्लास टी को स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन टी को देखि नेबा। ऑल क्लियर ना ऑल क्लियर ओके देन ठीक अच्छे। तेबे प्रसाद फर्स्ट के कंफर्म करेनि ऑल क्लियर स्क्रीन विजिबल अच्छी वॉइस क्लियर अच्छी ओके देन ठीक अच्छी। फर्स्ट देखि नबा फर्स्ट क्वेश्चन टी कौन। आज ए टीचर हु फार्मली बिलीव्स in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? जड़े शिक्षक भाव जो लेव वाइगोट्स्की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी रही से को मेथड को तुम्हें प्रिफर कर जे तुमर पिला मानकर बा स्टूडेंट मानन को आसेस करबा लगी कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम। अब बहुत बढ़िया समस्त आंसर प्राय ठीक अच्छी। ओके तो देख ये हमको क्वेश्चन कौन पचारि गोटे शिक्षक भाव में लेव वाइगोट्स्की जो आसेस करने लगी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी रही से कौन तुम मैंने पिला आसेस कर तो सेटा कौन ना कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन ए जो मैंने आंसर देचो से आंसर करेक्ट अच्छी। कनक लक्ष्मीप्रिया प्रसाद ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू समस्त आंसर करेक्ट अच्छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो जीवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रही टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड व्हाट। ए टीचर should have uniform and standard ways of teaching and assessment, segregate and label children based on their marks, engage in a dialogue with students and value their perspectives, ना impose strict rules upon his students। क्वेश्चन कौन पचारा टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड व्हाट। गोटे टीचर तार क्लासरूम रे माने स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करि थाए तो से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रही ताको कैटर करबा लगी गोटे टीचर कौन करबा दरकार। हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, ना सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, ना एंगेज इन ए डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स, ना इंपोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन हिज स्टूडेंट्स। तो एठी यार करेक्ट आंसर कौन हबो। बहुत बढ़िया तो देख वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो समस्त आंसर एठी मध्य प्राय ठीक अच्छी वेरी गुड बट ना ऑप्शन ए होबनी यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होउची यार करेक्ट आंसर। जेते बेले स्टूडेंट मानन को एंगेज रखिबो किछि कार्य रे बा किछि डायलॉग रे विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स तो सेते बेले से कैटर करि परिबो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तार क्लासरूम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी जो माने आंसर देइछ से आंसर करेक्ट अछि। नेक्स्ट हमें माने जिबा देन हमर क्वेश्चन रहिछि कोन असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ it induces fear and stress among the students,
Now it serves as a feedback for the students as well as the teachers. Now it is done only once at the end of the year. Now comparative evaluations are made to differentiate between the students achievements. ओके स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ओके तो आमको पचारा कौन आसेसमेंट कौन पाई दरकारी बा आसेसमेंट रो कौन काम रही आसेसमेंट इज पर्पजफुल इफ केमिति पार आसेसमेंट पर्पजफुल it induces fear and stress among the students no okay it serves as a feedback for the students as well as the teachers. Now it is done only once at the end of the year. Now comparative evaluations are made to differentiate between the students achievements. तो एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हम असेसमेंट निहाती भाबरे एठी पिला मानकर ओके कोन आंसर दउछ देखे वेरी गुड समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर ओके ओके देन assessment is purposeful if it serves as a feedback for the students as well as the teachers okay okay then next question टी देखिबा then our question रहिछि according to NCF 2005 the role of a teacher has to be authoritative dictatorial permissive ना facilitative. NCF 2005 अनुसार गोटे शिक्षकर भूमिका कौन हबा दरकार से अथॉरिटेटिव हबा दरकार कि डिक्टेटोरियल हबा दरकार कि परमिसिव हबा दरकार ना फैसिलिटेटिव हबा दरकार. तो एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो संग माने जल्दी जल्दी यार आंसर टी दे दियो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही छै आज ए टाइप रो क्वेश्चन तुम मानकर एग्जाम रे आसुची. तो कोन हबो यार करेक्ट आंसर देखि नबा कोन तुमे माने आंसर देइछो ओके ओके according to NCF 2005 the role of a teacher has to be facilitative. very good option D जो माने आंसर देइछो से मानकर आंसर करेक्ट अछि. very good all of you समस्ते एमिति आंसर दबा लागि ट्राई करो ओके. तो टीचर निहाती भाबरे फैसिलिटेटिव हेले ही स्टूडेंट माने आगो को बढ़ी परिबे. तो according to NCF 2005 the role of a teacher has to be facilitative okay. option D हो छियार करेक्ट आंसर. then question को जिबा next question रही research suggests that in a diverse classroom a teacher's expectations from her students dash their learning have a significant impact on are the sole determinant of shouldn't be correlated with do not have any effect on okay. Research suggests that in a diverse classroom a teacher's expectation from her students dash their learning ओके. रिसर्च एटा सजेस्ट करि थाए जे गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे गोटे टीचर रो एक्सपेक्टेशन रही थाए तार स्टूडेंट थारो जे से माने कोन हाव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ना द सोल डिटरमिनेंट ऑफ ना शुडंट बी कोरिलेटेड विथ ना डू नॉट हाव एनी इफेक्ट ऑन. तो एठी यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो हाव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग ओके. वेरी गुड बहुत बढ़िया समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि. तो देखो रिसर्च एटा सजेस्ट करि थाए गोटे डाइवर्स क्लासरूम रे टीचर एक्सपेक्टेशन रहबो तार स्टूडेंट मानक ठारो जे माने सेमान को ऊपर लर्निंग रो गोटे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ू. ठीक अछि ओके. देन ऑप्शन ए जो माने आंसर देइछो प्रायतः समस्त आंसर करेक्ट अछि. लक्ष्मी प्रिया तारा प्रसाद कनक प्रसाद ओके. तारा प्रसाद बहुत दिन परे आसिलो नै कि ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोन रहै छै देखिबा. देन हमर क्वेश्चन रहै छै देखो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स is an unrealistic goal, is a detrimental to children without disabilities, will increase the burden on schools, requires a change in attitude, content and approach to teaching. तो ये देखो कौन हम यार करेक्ट आंसर. तो देखो सांग माने जो माने भी आसुच लाइव अच्छो वर्तमान जदि तुमने चाहूच तुम सांग मान को शेयर करने को क्लासटा तो मध्य करि परिबो. ठीक अच्छे कारण ए जो एग्जाम गुड़ाक सॉरी आग को जो एग्जाम गुड़ाक रही एवं जो क्वेश्चन गुड़ाक तुम डिस्कसन करा प्रायतः प्रायतः कौन सब क्वेश्चन गुड़ाक पूर्व एग्जाम गुड़ाक टीजीटी एग्जाम रे हो ओएवी एग्जाम रे हो सब क्वेश्चन गुड़ाक ओडिया हो इंग्लिश हो पेडागोजी हो इकोनॉमी ज्योग्राफी हिस्ट्री जहाँ भी क्वेश्चन तुम आसूची पूर्व बा आमर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित जो गुड़ाक इंपोर्टाट रही से क्वेश्चन ही डिस्कसन करा
सो समस्ते आसिक जॉइन करने को अनुरोध। तो देख आमर ये कौन पचारि इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन with special needs is an unrealistic goal na is detrimental to children without disabilities, will increase the burden on schools na requires a change in attitude content to teaching। very good देखा एठी मध्य प्राय समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि। ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर, कारण जेतेबेले चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स मानक कथा आसी जाय थाए बा जो माने इम्पायर्ड होइछंती, ठीक अछि। तो स्पेशल नीड्स रो चिल्ड्रेन मानक पई इंक्लूजन से मानक पई कोन पई दरकार हेता निहाती भाबरे प्रति स्कूल रे किंबा गोटे एनवायरनमेंट जोठी सबु माने एकाठी पढुचंती तो सेठी गोटे एटीट्यूड रो समस्तंक मध्य चेंजेस आनिबार रहिछि कंटेंट रे मध्य एवं टीचिंग रो अप्रोचेस रे मध्य निहाती भाबरे चेंजेस सेबा दरकार चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स मानक लागि। ओके, तो ऑप्शन डी होछि यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is incorrect because it can confuse the children and they may feel lost. Option B rohichi many skills from their peers. Option C rohichi correct, it makes the classroom more hierarchical. ऑप्शन डी रही इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन। तो ये देख हाविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रेन फ्रॉम वैरिड सोशल, देख गोटे क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार पिला रोचंती सेमानकर सामाजिक हो अर्थनैतिक हो आर्थिक हो किंबा सांस्कृतिक बैकग्राउंड समस्त भिन्न भिन्न अटे नहीं कि। तो सेठी एका बेले जेहेतु से माने बसिकी गोटे क्लासरूम रे पढ़ी थांती तो एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट एठी करेक्ट हबो बोली का तुमने भाबु किंबा इनकरेक्ट हबो बोली भाबुछ। इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कंफ्यूज द चिल्ड्रेन एंड दे मे फील लॉस्ट। जदि एकाठी समस्त पढ़िबे ताले समस्त कोन कंफ्यूज हे कि लॉस्ट फील करिवे कि एटा हबो नहीं। करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पियर्स, एटा ठीक हबो कारण तार सांग मानक ठारू गोटे स्टूडेंट विभिन्न प्रकार कथा शिखि थाए। ऑप्शन सी रही करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, ना एटा भी होबनी। नेक्स्ट रही इनकरेक्ट बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरी कंपटीशन, नो। तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो माने आंसर देइछो समानकर आंसर करेक्ट हबो बिकॉज चिल्ड्रेन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पियर्स। ओके, ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पायरमेंट जहाँ को शुभु नहीं ठीक से शुड बी सेंट ओनली टू ए स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पायर्ड एंड नॉट टू ए रेगुलर स्कूल। ताको केवल हियरिंग इम्पायर्ड स्टूडेंट माने जोठी ना पढुचंदे सेठी को छाड़ीबा दरकार, रेगुलर स्कूल को नुहे। नाउ विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। ओके, ऑप्शन सी रही कैन डू वेरी वेल इन ए रेगुलर स्कूल इफ सुइटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेस आर प्रोवाइडेड, will never be able to perform on a par with classmates in a regular school। तो एठी यार करेक्ट आंसर कौन हबो गोटे हियरिंग इम्पायरमेंट स्टूडेंट ताको आमे माने हियरिंग इम्पायर स्कूल को ही पठेबा, रेगुलर स्कूल को न पठे कि ना एकेडमिक एजुकेशन ता पई कि बेनिफिट हबो नाही, केवल ताको वोकेशनल ट्रेनिंग दबा दरकार ना से रेगुलर स्कूल को जदि जाउची रेगुलर स्कूल को ताको जदि छड़ा जाए ताहले सेठी ताको जदि सुइटेबल फैसिलिटेशन दिया जाए, फैसिलिटी दिया जाबा सहित रिसोर्सेस मध्ये प्रोवाइड करा जाए ताहले से निहाती भाबरे भलो करिवो। ना विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन ए पार विथ क्लासमेट्स इन रेगुलर स्कूल, कि रेगुलर स्कूल से चली पारिबो नाही। तो एठी करेक्ट आंसर टी कोन हबो ऑप्शन सी। ठीक अछि, जो मैंने ऑप्शन सी आंसर देइछ समानकर आंसर करेक्ट हबो कारण हियरिंग इम्पायरमेंट स्टूडेंट हेइथिले भी जदि ताकु रेगुलर स्कूल रे सुइटेबल फैसिलिटेशन मिलुची एवं रिसोर्सेस दिया जाउची ताले निहाती से भलो करिवो ही करिवो पाठ पढि पारिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर। गोटे गिफ्टेड लर्नर रो एमानक मध्यरु कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक अटे ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड।
ऑप्शन बी रही ही कैन फील understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. He is highly temperamental. He engages he engages in ritualistic behavior like a hand flapping, rocking, etc. तो देख एमानक मध्यरु गिफ्टेड लर्नर रो कैरेक्टरिस्टिक कोटा he gets aggressive and frustrated. No, he can feel understimulated and bored if class activities are not challenging enough. ओके जदि ताको क्लास रो माहौल टा भल न लगे ताहले से कौन बोर हो ना ही इज हाईली टेम्परामेंटल ना ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग रॉकिंग एक्सेट्रा कि ताले बड़ेबा कि माने डेया डी करबा सेटा ता सहित से एंगेज रहइबो एटा कोन गिफ्टेड लर्नर रो कैरेक्टरिस्टिक की नो तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ओके he can feel understimulated and bored if class activities are not challenging enough जदि क्लास रो एक्टिविटी चैलेंजिंग न होला भल से पढ़ा न होला किबा क्वेश्चन आंसर हो किबा किछि भी काम हो बा किछि भी पढ़ा हो जदि सेटा ताको इंटरेस्टिंग न लागिला ताल से बोर हो जिवो कारण से गिफ्टेड लर्नर ओके ऑप्शन बी हो छेर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि a teacher can enhance effective learning in her elementary classroom by offering rewards for small steps in learning, drill and practice, encouraging competition amongst her students, connecting the content to the lives of the students. Okay? देखिबा कौन हम यार करेक्ट आंसर A teacher can enhance effective learning in her elementary classroom. Elementary classroom कथा पचारिछि गोटे टीचर तार इफेक्टिव लर्निंग को एनहांस करि परिबो एलिमेंटरी क्लासरूम रे केमिति ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग ना ड्रिल प्रैक्टिस करिकी ना कंपटीशन स्टूडेंट मान के मध्य रे एनकरेज करिबो कंपटीशन को ना कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट मानकर नीतिदिनिया जीवन सहित जो लर्निंग को कनेक्ट करके पढ़ेले इफेक्टिव लर्निंग टा एलिमेंटरी क्लासरूम रे भल हो पारिबो तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो वेरी गुड कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स ओके ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स children are scientific investigators children are active explorers of the environment question कोन पचला which of the following statements about children are correct पिला मानक संपर्क रे मानक मध्यरो को स्टेटमेंट ता करेक्ट हबो children are passive recipient of knowledge children are problem solvers children are scientific investigators children are active explorers of the environment को स्टेटमेंट गुडा का करेक्ट हबो वेरी गुड देखो चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज नो एटा हबो नाही चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स यस नेक्स्ट चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ कोर्स चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरनमेंट तो बी सी डी को ऑप्शन रे रहिछि ऑप्शन बी रे रहिछि तो ऑप्शन बी होछि यार करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया तो जो माने ऑप्शन बी यार आंसर देइछो समानकर आंसर करेक्ट अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टे देखिबा which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in students which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in students छात्र मानक मध्य रे conceptual development को encourage करिबा पई कि एमनक मध्य रो most effective method कोटा ऑप्शन ए रहिछि new concepts need to be understood on their own without any reference to the old ones option b रहिछि replace the students incorrect ideas with correct ones by asking them to memorize now option c रहिछि give students multiple examples and encourage them to use reasoning now use punishment till students have made the required conceptual changes कौन हबो एठी यार करेक्ट आंसर एमान को मध्यरु कोटा गोटी इफेक्टिव मेथड अब एनकरेज करिबा ले कांसेप्चुअल डेवलपमेंट को स्टूडेंट मान को मध्य रे गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज ऑफ रीजनिंग ओके
न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू नो एटा हबनी रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज नो यूज पनिशमेंट नो सो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो माने आंसर देइछो सेमानकर आंसर करेक्ट अछि वेरी गुड ऑल ऑफ यू समस्तकर आंसर प्रायतः ठीक रहिछि ऑप्शन सी समस्त आंसर देइछो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देन हमर क्वेश्चन रहिछि primary school children will learn most effectively in an atmosphere primary school children will learn most effectively in an atmosphere where their emotional needs are met and they feel that they are valued where the teacher is authoritative and clearly dictates what should be done where the focus and stress are only on mastering primarily cognitive skills of reading, writing, and mathematics, where the teacher leads all the learning and expects students to play a passive role. Very good. तो देखो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन मोस्ट इफेक्टिवली को एटमोस्फियर रे भल से शिखि पारिबे ओके जोठी कि इमोशनल नीड रहितिबो सॉरी इमोशनल नीड सहित सेमानंकु भ्यालु दिया जाउथिबो सेमानकर फीलिंग कथा बुझा जाउथिबो ना गोटे टीचर गोटे क्लासरूम रे अथॉरिटेटिव टाइप रो बा जो मो ही सर्वस्व माने मो ही सब किछि करबी टीचर एमिति कथिबो टीचर बेस्ट एवं क्लियरली पिला मानक कथा बुझा जाउ नथिबो सेठी ना वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरीली कॉग्निटिव स्किल्स केवल कॉग्निटिव स्किल जेमति कि रीडिंग राइटिंग आ मैथमेटिक्स ऊपर नजर दिया होतिबो ना जोठी टीचर लीड करूथिबो ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्ले ए पैसिव रोल पिला माने पैसिव एवो टीचर एक्टिव थिबे तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो अति इजी क्वेश्चन वेरी गुड ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर ओके वेयर देयर emotional needs are met and they feel that they are valued okay option a is the correct answer प्राय तो समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि तो आमे माने देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा देखो एठी कोन रहिछि a child sees a crow flying past the window and says a bird what does this suggest about child's thinking the child has previously stored memories the child has developed the concept of a bird the child has developed some tools of language to communicate her experience गोटे छुआटे कौन कला कि झरका दाढ़े देखला कि काउटे उड़ी जाउची तो से कहला गोटे पक्षी ओके तो एठी कौन हबो यार करेक्ट आंसर व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग चाइल्ड ताले कौन भाबीची देखिबा चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज माने से पूर्वरु देखि जे पक्षी गुडा एमिति उड़ी थांती तो से कहला गोटे पक्षी बोलिका ऑप्शन बी रे रहिची द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ ए बर्ड विषय रे से गोटे निज मध्य रे निज माइंड रे गोटे कांसेप्ट क्रिएट करि देइची द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस माने सेटा देखिला माने से कहि भी परिला जे एटा गोटे पक्षी बोलिका ताहले तीनटा जाक हबो यार करेक्ट आंसर तो ए बी बी सी ना ए बी सी हबो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठीक अछि ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर सब गुडी को ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन रहिछि देखिबा व्हाट शुड ए टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क्स विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन गोटे टीचर तार स्टूडेंट को माने व्हाट शुड ए टीचर टेल हर स्टूडेंट तार टीचर गोटे टीचर तार स्टूडेंट को कोन कहइबो टू एनकरेज देम टू डू टास्क्स विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन द्वारा समान को एनकरेज करबा लागि गोटे टीचर तार स्टूडेंट मान को कोन कहइबो कम ऑन फिनिश इट बिफोर सी डज जल्दी जल्दी कर दियो आउ केही करबा आगरो ना व्हाई कैंट यू बी लाइक हिम तमे तावली को मे करि पारनो सी ही हैज डन इट परफेक्टली देखो से जल्दी जल्दी कर देलानी ताको एम्ति कहइबो कि जल्दी जल्दी करबा को कहइबो कि कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ए टॉफी कि जल्दी टास्क कर दियो मु तुमको गोटे टॉफी देबी ना ट्राई टू डू इट यू विल लर्न ना ताको कहइबो जे निजे चेष्टा करो तुमे जानि परिबो जे ए कामटा केमिति होची जहाँ भी गोटे टास्क दिया हैतिबो तो ताको इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे गोटे टीचर तार स्टूडेंट को केमिति एनकरेज करबो एमान को मध्यरु कोन कले से इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली का हमें ताको कहबा कोन वेरी गुड ट्राई टू डू इट यू विल लर्न ओके तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर वेरी गुड ऑल ऑफ यू
तो ऑप्शन डी जो माने आंसर देइछो से मानकर आंसर करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा। How can a teacher encourage her students to be intrinsically motivated towards learning for the sake of learning? गोटे टीचर तार स्टूडेंट को इंट्रिंसिकली मोटिवेशन केमिति दब शिक्षा क्षेत्र रे बा शिखिबा लागि किछि जिंस फॉर द सेक ऑफ लर्निंग by inducing anxiety and fear, by giving competitive tests, by supporting them in setting individual goals and their mastery, by offering tangible rewards such as trophies. हाँ एटा भी सेही क्वेश्चन रो एटा आ गोटे टाइप कहबा को गले चलेबो सेम ही क्वेश्चन बस टिके बुलेई के आ गोटे कथा पचार देछि नै कि ओके वेरी गुड एटा तो इजी रही क्वेश्चन समस्त आंसर दे परिबो तो जल्दी जल्दी कहि दे यार आंसर टी कोन हबो बोली वेरी गुड बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही छि देखिबा In an elementary classroom, an effective teacher should aim at the students to be motivated to learn so that they become curious and love learning for its own sake. Now, to read, memorize so that they become good at recall. Now, by using punitive measures so that they respect the teacher. Now, to perform so that they get good marks in the end of the year examination. In an elementary classroom, gote elementary classroom re gote effective teacher should aim at the students to be motivated कौन करेगी टू लर्न सॉरी हाँ गोटे एलिमेंटरी क्लास रे गोटे इफेक्टिव टीचर कौन करिबो जेमति कि माने तार लक्ष्य होची जे स्टूडेंटा मोटिवेटेड केमिति का हबो ओके ताल से कौन करिबो टू लर्न so that they become curious and love learning for its own sake. Now to rate memorize so that they become good at recall by using punitive measures so that they respect the teacher. To perform so that they get good marks in the end of the year examination. Okay, कौन हबो by using punitive measures so that they respect the teacher. ओके ना देखो एलिमेंटरी क्लास हेले भी कोन केवल इट्स माने फॉर इट्स ओन सेक हबो कि हबो नहीं नेक्स्ट रही कोन टू रेट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल माने केवल घोषा बळद भली घोषेबा ना सेटा भी हबोनी डीटा रही कोन टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन केवल कोन लास्ट को जो ईयर ऑफ सॉरी एग्जामिनेशन जो लास्ट एग्जामिनेशन हो एनुअल एग्जाम पाई कि केवल पड़िबो ना बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स सो दैट दे रेस्पेक्ट द टीचर एटा ही हबो यार करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कॉर्पोरल पनिशमेंट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग कॉम्पिटिटिव क्लासरूम एट देखो यार करेक्ट आंसर कोन हबो Which of the following is an example of effective school practice? एमानक मध्यरो कोटा होची गोटे effective school practice रो example constant comparative evaluation ना corporal punishment ना individualized learning ना competitive classroom एठी यारो correct answer कोन हबो पचारि छि कोन example of effective school practice individualized learning okay ठीक अछि Okay, then option C हो chair correct answer. Next question टी देखिबा. The cephalocodal principle of development explains how development proceeds from general to specific function, differentiated to integrated function, head to toe, rural to urban areas. Cephalocodal एटा तो बुझी परिबो इजी क्वेश्चन टा एटा cephalocodal कहबो कोन cephalocodal principle of development explains how development proceeds from माने केमिति का डेवलपमेंट हेते cephalocodal principle अनुसार वेरी गुड एटा हेते केमिति हेड टू टो ओके हेड टू टो होचियार करेक्ट आंसर सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट prenatal period middle childhood period adulthood early childhood period Which of the following is a sensitive period pertaining to language development?
भाषा शिक्षा रे एमानक मध्यरु गोटिए सेंसिटिव पीरियड कोटा प्रीनाटल पीरियड कि मिडिल चाइल्डहुड पीरियड कि अडल्टहुड पीरियड कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तो ये करेक्ट आंसर टी कौन हम भाषा शिक्षा केतेबेले पिलाटी केतेबेले शिखिबा को ट्राई करथिबो बापा मामा बो दादा खुड़ी जेजे जेजेमा केतेबेले डाकुथिबो से अर्ली चाइल्डहुड पीरियड रे ओके अर्ली चाइल्डहुड पीरियड ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर ठीक अछि सेंसिटिव पीरियड कोटा ना अर्ली चाइल्डहुड पीरियड ता होची लैंग्वेज डेवलपमेंट रे करना गोटे सेंसिटिव पीरियड ठीक अछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन Then our question रही a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person. Send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between heredity and environment, growth and development, health and training, discipline and nutrition. देखा गोटे छुआ अच्छी जहाँ को कि 6 वर्ष ठीक अच्छी से तार स्पोर्टिंग एबिलिटी बहुत भल से बहुत बढ़िया खेली पारुची ओके तो तार बापा माँ मध्य दी जण स्पोर्ट्स पर्सन ओके तो ता सहित ताको से माने कोचिंग मध्य दउछंती ट्रेन करूछंती ताको प्रति सप्ताह रे ताकि तार कैपेबिलिटी अधिक बढ़ी पारिबो तो ए जो इंटरेक्शन ता द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट काहा का मध्य रे इंटरेक्शन जोगु से छुआटी भल से खेली पारुची हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्थ एंड ट्रेनिंग कि डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन वेरी गुड ऑप्शन ए होची यार करेक्ट आंसर कारण हेरिडिटी मध्य रहिला ता बापा माँ मध्य स्पोर्ट्स पर्सन ता सहित ताको ट्रेनिंग दोछंती एनवायरनमेंट मध्य एनवायरनमेंट रो मध्य हाथ अछि एथिरे तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होची यार करेक्ट आंसर प्रायतः समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि वेरी गुड ऑल ऑफ यू ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Which of the following are secondary agents of socialization? एमान को मध्यरु कोटा होची secondary agent socialization रो secondary agent family and neighborhood school and neighborhood school and immediate family members na family and relatives secondary socialization रो secondary agent एमान को मध्यरु किए सेकेंडरी एजेंट पचारिछि फैमिली एंड नेबरहुड हबो कि स्कूल एंड नेबरहुड हबो कि स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर हबो ना फैमिली एंड रिलेटिव हबो वेरी गुड स्कूल एंड नेबरहुड होछि यार करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया समस्त आंसर करेक्ट अछि आउ जो माने अच्छो वर्तमान लाइव अच्छो जो माने समान को रिक्वेस्ट जे समस्ते आउ बाकी तक जो माने आंसर दोनो समस्ते आंसर दियो ओके बहुत इजी क्वेश्चन रही छे आज तो किछि भिडियो भी क्वेश्चन नहीं सब क्वेश्चन बुझला बलिया बुझी कि तुमे माने आंसर भी देई परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन according to Lev Vygotsky the primary cause of cognitive development is equilibration social interaction adjustment of mental schemas stimulus response pairing कौन हम ये लेव वाइगोट्स्की जितेबले कथा आसो से मन रखिब आइदर तांकर लैंग्वेज उपरे कथा थिबो नहले सोशल बा सोसाइटी उपरे कथा थिबो ठीक अछि तो एठी होची कोन सोशल इंटरेक्शन लेव वाइगोट्स्की जो प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहिछि सेटा होची कोन ना सोशल इंटरेक्शन तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर ओके तो ऑप्शन बी जो माने आंसर देइछो सेमानकर आंसर करेक्ट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि कोन देखिबा in the context of Kohlberg's stages of moral reasoning under which stage would the given typical response of a child fall देखिबा कोन पचला आउथरे देखिनबा in the context of Kohlberg's stages of moral reasoning under which stage would the given typical response of a child fall तो कोहलबर्ग जो मोरल रीजनिंग रो स्टेजेस रहिछि एमान को मध्यरो कोटा सेथि मध्यरे आसी थाए योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट सो यू शुड बी ऑनेस्ट तो एठी कहा जाउछि गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट को कहउछि जे तोरो माने तोरो बापा मां बा तोरो पेरेंट्स बहुत खुशी हेबे जदि तू करना ऑनेस्ट रहिलु तो निहाती भाबरे तते ऑनेस्ट रहबा दरकार ताले ए जो एग्जांपल टा कोहलबर्ग मोरल रीजनिंग रो को स्टेज रे आसुची पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन ना लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन तो जदि
एठी पचला कौन जदि तू ऑनेस्ट रहिलु ताले तोर बापा माँ बहुत खुशी हेबे बा तो उपरे गर्व करेबे ताले एठी काहार बा को मोराल रीजनिंग कथा कोहलबर्ग एठी प्रकाश करिसंती गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन ठीक अछि ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा according to Jean Piaget which of the following is necessary for learning एमान को मध्यरो शिक्षा पाई कि जीन पियाजेट को अनुसार कोटा निहाती आवश्यक रही ऑप्शन ए रही एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर ऑप्शन बी रही ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स ऑप्शन सी रही बिलीफ इन इमेंट जस्टिस ऑप्शन डी रही रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स ओके according to Jean Piaget which of the following is necessary for learning Jean Piaget को अनुसार एमान को मध्यरो लर्निंग पाई कि कोटा निहाती आवश्यक ना एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर परिवेश को माने परिवेश को निहाती भाव में एक्टिवली एक्सप्लोर करि परथिबो बा करिबो लर्नरटा ना ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अडल्ट्स अडल्ट माननको बा अडल्ट मानकर बिहेवियर को ऑब्जर्व करिबो कि बिलीफ इन इमिनेंट जस्टिस कि रेनफोर्समेंट बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स एठियार करेक्ट आंसर टी कोन हबो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर इज पियाजेट को अनुसार निहाते भाबरे एटा नेसेसरी लर्निंग पाई कि एटा नेसेसरी रहिछि ओके ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर जो माने ऑप्शन ए आंसर देछ से मानकर आंसर करेक्ट अछि ओके देन क्वेश्चन टी देखो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information these two processes are known as accommodation and adaptation assimilation and adaptation equilibration and modification assimilation and accommodation तो देखो गोटे शिशु पूर्वर किसी कथा से जानी से साइकिल चलेबा जानी गाड़ी चलेबा जानी जितेबाला ताको गाड़ी चलेबा को दिया तो से कौन कर निहाती भाव में साइकिल से केमी चलाऊला तो गाड़ी केमी चलेब से निहाती भाव में कोरिलेट कर गोटे एग्जांपल देकी कहूँ ओके तो ये आम कौन कहीपर जीन पियाजेट को अनुसार यहाँ माने किछि पूर्व ज्ञान को वर्तमान से यूज करके किछि गोटे नुआ ज्ञान से शिखि पारुछि बा ग्रहण हासिल करि पारुछि तो एठी कोन हबो accommodation and adaptation हबो assimilation and adaptation हबो कि equilibration and modification हबो ना assimilation and accommodation हबो ओके तो एठी यार करेक्ट आंसर टी होछि कोन ना assimilation and accommodation ठीक अछि ओके देन ऑप्शन डी होछि यार करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा Then our question रही in a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that promotes discovery, is restrictive, discourages inclusion, encourages repetition. गोटे progressive classroom setup रे teacher learning पाई कि गोटे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करि थाए जोटा कि प्रमोट करि थाए डिस्कवरी को कि गोटे रेस्ट्रिक्टिव क्लासरूम बा रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट हेतिबो ना डिस्करेज इंक्लूजन को सेटा डिस्करेज करूथिबो कि रिपीटेशन को एनकरेज करूथिबो बा रिपीटेशन बारंबार करूथिबो ताहले एटा मध्ये अति इजी क्वेश्चन कोन होबो यार करेक्ट आंसर प्रमोट्स डिस्कवरी ओके ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि Howard Gardner's theory of multiple intelligence suggests that every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all of the intelligences. Now, intelligence is solely determined by IQ test. Now, teachers should use MI as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Now, ability is a destiny and doesn't change over a period of time. एठी करेक्ट आंसर कौन हबो Howard Gardner's theory of multiple intelligence by MI suggests that teachers should use MI as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Okay? Option C हो correct answer. Next question.
A 5-year-old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by the girl? गोटे 5 वर्षर झीटे से कौन करुच्ची कि जितेबाला तार ड्रेस को फोल्ड करिकी तार टी शर्ट को फोल्ड करिकी रखुची सेतेबेले से निज सहित कथा होची तो एई प्रकार ए जो स्टेटमेंट रही बिहेवियर रो कौन सेटा शो करुची ए जो गर्ल रो बिहेवियर रो को कंटेक्स्ट को शो करुची देखिबा ऑप्शन रही जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोट्स्की would explain this as egocentric nature of the child's thought. Now Jean Piaget would explain this as egocentric speech while Lev Vygotsky would explain this as a child's attempt to regulate her actions through private speech. Now Jean Piaget would explain this as social interaction while Lev Vygotsky would explain this as an exploration. Now, Jean Piaget and Lev Vygotsky would explain this as child's attempt to imitate her mother. Correct answer कौन हबो? क्वेश्चन कौन थिला? गोटे 5 वर्षर झील जितेबाला निज टी शर्ट भांगी रखुची बा फोल्ड करिकी रखुची सेतेबाला से निज सहित कथा होची तो एठार करेक्ट आंसर हबो कोन Jean Piaget would explain this as egocentric speech while Lev Vygotsky would explain this as a child's attempt to regulate her action through private speech. Okay, तो Jean Piaget जहाँ को egocentric speech कहउचंती से जो छुआटा निजे फुस करिके कथा होची निज सहित Jean Piaget ताको egocentric speech कहउथिला बेले Lev Vygotsky ताको innate speech बा private speech बोलिका रेगुलेट करिसंती तो ऑप्शन बी जो माने आंसर देछो समानकर आंसर करेक्ट हबो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि जेंडर इज अन जेंडर टा गोटे कोन बायोलॉजिकल एंटिटी की फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट की इनेट क्वालिटी की सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर इज अन व्हाट बायोलॉजिकल एंटिटी की फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट की इनेट क्वालिटी की सोशल कंस्ट्रक्ट आंसर दियो समझते जेंडर टा होची गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट ओके जेंडर टा कोन गोटे सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट ए बायोलॉजिकल एंटिटी नॉट ए फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नॉट ए इनेट क्वालिटी दिस इज व्हाट सोशल कंस्ट्रक्ट ओके तो सांग माने वर्तमान आमे माने डिस्कशन कर देले हमरो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू जहा कि हमरो पूर्व एग्जाम रे मध्ये आसी जाईची आई होप कि तुम मैंने सब क्वेश्चन गुडी को ठीक से बुझी पारिथिबो जानि पारिथिबो ए जे क्वेश्चन थिला ए जे तो मॉडरेट क्वेश्चन थिला तो समस्त को आसीथिबो निहाती भाबरे तो एटा को आउथरे मध्ये देखि नेले जो क्वेश्चन गुडा को तुम मैंने करि ना हो तो से गुडा को सब करि नै जिवो ठीक अछि तो नेक्स्ट क्लास रे आमे किछ नुवा टॉपिक ऊपर किना डिस्कशन करबा काली तो वर्तमान रो क्लास टी को एठी रखिबे जदि आउ कहर किछ असुविधा रहिछि तो मते पचारि पारो नचेत आज रो क्लास टी को एठी सारिबा ऑल क्लियर ठीक अछि तेबे ओके देन तो वर्तमान क्लास को एठी रखुछि थैंक यू।